So again, we are going to start new, that is a microbiology, and microbiology is a basic subject, because if you are not understanding the, if you are not well aware about the anatomy, physiology, biochemistry and microbiology, अगर आपका HAP biochemistry microbiology clear नहीं है, so you will not understand pharmacology, and that's why this is the basis. We have completed our biochemistry. We have seen our important chapters from HAP also, so that will be taken again. So whatever is remaining. Now microbiology is a minor. They used to call it as a minor, because other classes they used to call this is a minor, and I used to call this a basic. Because if you understand the microbiology, then only you are going to understand the antibacterial drugs. Okay? If you don't know about the organisms, the microorganisms, pathogenic organisms, how they will multiply in your body, their causative organism, their diseases, how they will replicate their DNA, how they will transcript, how they will translate, how they will synthesize the protein, what are their pathogenic component of cell. So if you don't know this, you will never understand the antibacterial drugs and their mechanism of action, as well as adverse effects. So one has to understand microbiology first, then he or she has to go for antibiotic part. So first we'll see microbiology. I am not going to teach you microbiology thoroughly. I will explain you from GPAT point of view. So whatever important for GPAT, that will be discussed over it, and after that we will start our antibacterial from pharmacology as well as medicine. So today we are going to see this microbiology. Microbiology means what? This is a science which deals with the microorganisms. So which are either helpful or they can damage, they can cause different kind of diseases. So microorganisms, another microbiology. In that you are going to have bacteria, viruses, and fungus, actinomycetes, rickettsia, etc., etc. So again, this microbiology is, you can say, a little bit important for you GPAT, and you can expect at least 3 to 4 questions, 3 to 4 questions from. But there are questions from microbiology. Well, last year also there was a question. So you can say they are going to ask you at least 3 to 4 MCQs from microbiology, but you should understand this microbiology. So क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे एग्जैक्टली कोई नहीं बोल सकता, मतलब फिक्स कोई नहीं बोल सकता ये यही क्वेश्चन आएगा. कौन सी एरियाज है, what are the areas from where they used to ask you questions frequently, so that are going to be discussed. So again, microbiology for GPAT, right? Microbiology for GPAT, Niper and other exams. So first, microbiology is nothing but the study of microorganisms which are either helpful to our human beings, or either they will cause particular kind of infection. So most of the microorganisms, they are not harmful, but few are causing infections, which may be either serious infection or which may be either casual infection. First of all, you should know the historical background of this, and what is the historical background. So some historical points are there. I have only summarized a few points, and in the different books they have given a lot of points. So history of microbiology in the 18th century. 18th century, Edward Jenner, याद रखना इसका नाम. Edward, he discovered the vaccine of smallpox. So smallpox vaccine was discovered by Edward Jenner. So for दो बार क्वेश्चन. Edward Jenner discovered the smallpox vaccine. दो बार क्वेश्चन उसका. Then Robert Koch, he discovered the anthrax, the causative agent for anthrax. Then in the 19th century, Paul Ehrlich, he developed the modern concept of chemotherapy and chemotherapeutic agent. Chemotherapy means use of chemicals for the treatment of pathogenic organism. So use of antibiotics simply in the infectious disease known as a chemotherapy. Paul Ehrlich developed the modern concept of chemotherapy and chemotherapy agent. So, but antibiotics and chemotherapy agent, so it is a little bit difference. Antibiotics means which are acting against the microorganism, which are also isolated from microorganism. So mostly antibiotic जो होता है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही आइसोलेट किया जाता है और उनके अगेंस्ट में यूज किया जाता है. बट कीमोथेरेपेटिक एजेंट मतलब क्या, ये सिंथेटिक ड्रग होते हैं. In the 20th century, okay, August 1 Wasserman, very important. August 1
Wasserman. August von Wasserman. So he developed the complement fixation test for syphilis. So complement fixation test for syphilis. It is a diagnostic test for identification of syphilis. And the Wasserman's test. तो कभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है दो बार. Diagnostic test for diagnosis of syphilis is nothing but the Wasserman test. उसका एक टेस्ट होता है Wasserman test. That is nothing but the complement fixation test. So to confirm the infection of syphilis, it is caused by Treponema pedialis. Syphilis, Treponema is a STD, sexually transmitted disease. So it is confirmed by Wasserman test. Then Frederick discovered the bacteriophage. Bacteriophage क्या होता है? Bacteriophage मतलब it is not a organism, a microorganism नहीं होता है. It is obligate मतलब ये है ना. So when a virus will infect a bacteria, अगर कोई बैक्टीरिया है उसके ऊपर वायरस ने अटैक किया, that is nothing but the bacteriophage. When virus attack on a bacteria or when virus infect the bacteria, that is known as a bacteriophage. Okay, so here Frederick Toward discovered the bacteriophage. Now Robert Koch. So he given the germ theory of disease. मतलब क्या है कि whatever diseases they are there, so it is because of the infection of germs. ऐसा उसने कहा था germ theory of disease. Robert Koch germ theory of disease. कभी-कभी आपको match the following type of question आता है. So they will give you different scientists and they will give you their contribution in the another column. They will ask you find out the correct match. Paul Ehrlich again in 1990. Oh, sorry, this is a different Ehrlich. Ehrlich in 1992 given the theory of immunity. Anthony van Leeuwenhoek. One more scientist is there, Anthony van Leeuwenhoek. So first he observed a microorganism under the microscope. So who is the father of microscope? ऐसा भी क्वेश्चन आता है. इसका भी आंसर है Anthony van Leeuwenhoek. So he developed the microscope. Anthony van Leeuwenhoek. Then Alexander Fleming. He discovered the penicillins as an antibacterial drug in 1928. और अभी जो DHS एग्जाम हुआ है महाराष्ट्र में DHS pharmacist, इसमें सेम क्वेश्चन था. Alexander Fleming discovered the penicillin in the year of following. और इसका आंसर था 1928. मतलब ये जो भी पढ़ा रहा हूँ it is not only for applicable for GPAT. So बहुत सारे आपके बाकी ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जितने भी एग्जाम्स है उसमें सब में ये आपको बेनिफिशियल होने वाला है. तो कोई ऐसा मत समझो कि सिर्फ जीपीएट के लिए. So it is applicable for everything. So remember. Then Watson and Crick in 1923, you know that they proposed the model of DNA, that is DNA structure. As they discovered the DNA. You know that we have seen the biochemistry. So these are the few important historical points. So tomorrow also I will find out in other books. I will also extend. These microorganisms, as I told you, these microorganisms most of the time they will not harm us humans. Few organisms they causes the infection, which are the serious infection, and they leads to disease. Right? So what are these infections? So various microorganisms and the disease caused by them. So अब कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको कि whooping cough is caused by like this. So various microorganisms, few list. It is not all. The list is not of all organisms. So the list is of few organisms which are very important. Okay? So first is nothing but the bacteroids. Bacteroids they will cause pelvic organ infection. Pelvic organ infection cause कौन करता है? Bacteroids. Then Brucella abortus. ना Brucella abortus नाम का ये organism है, bacteria है. So it causes the brucellosis. Brucella abortus causes brucellosis. Clostridium tetani will cause tetanus. जो whenever you will get a injury due to some iron utensils, अगर आपको कोई है ना जैसे आयरन का या लोखंड का कुछ लगता है तो घर वाले भी बोलते हैं आपको जाके पहले एक टीटी का इंजेक्शन ले लें.
क्या बोले टीटी का इंजेक्शन. So TT, that means tetanus, which is caused by Clostridium tetani, and it is due to the endotoxin released by Clostridium tetani. So that will affect your muscles and cause tetanus. Right? E. coli, Escherichia coli. So it is a gram-negative organism. Remember? So it causes the GIT infection, UTI infection, peritonitis. Okay? GIT infection, gastrointestinal infection, urinary tract infection, and peritonitis. So E. coli. So most of the time E. coli will not harm you, but E. coli, if they causes the infection like UTI, GIT, and it is mostly UTI is most common in the females. UTI सबसे ज़्यादा females में होता है because in the female urethra is a shorter, in the male urethra is a longer. Then Mycobacterium leprae. So that is a causative organism for leprosy. Microorganism leprae क्या है? It is a causative organism for leprosy. And remember, it is acid fast bacteria. क्या होता है? Acid fast bacteria. Acid fast bacteria. Mycobacterium genus का Mycobacterium leprae और because the leprosy. When Mycobacterium leprae अगर leprosy करता है तो Mycobacterium आपका जो tuberculosis है Mycobacterium tuberculosis, it will cause tuberculosis infection. Right? Mycobacterium leprae will cause leprosy. Mycobacterium tuberculosis will cause tuberculosis. Both are the acid fast bacilli. Treponema pedilin. Treponema pedilin will cause syphilis. Will cause syphilis. Syphilis is a sexually transmitted disease. Syphilis, gonorrhea, these are two deadly STDs. ट्राइपोनेमा पेडिलम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार. तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिफिलिस ट्राइपोनेमा पेडिलम. कॉलरा इज कॉज्ड बाय ड्यू टू विब्रियो कॉलरा. कॉलरा इज कॉज्ड बाय ड्यू टू विब्रियो कॉलरा. जैसे अभी कोरोना का जो एपिडेमिक आया था, सॉरी पेंडेमिक आया था, तो उसके पहले कॉलरा कभी आया था. उसके पहले कॉलरा कभी आया, मतलब कोरोना इज नॉट द फर्स्ट टाइम, आपको मालूम है. उसके पहले कॉलरा का आया था, उसके पहले टीबी का आया था, उसके पहले बहुत है, चिकन बॉक्स आता है, बहुत आता है. ठीक है, मम्स आता है. मम्स तो बहुत कॉमन होता है. गाल फोगी है ना, गाल फोगी होता है. किसी को अगर गांव में मम्स हो गया तो पूरे गांव को मम्स होता है ना, पूरे गांव को मम्स. और ये जो है ना, ये सब इंडिया में पहले था ही नहीं. सो ऑल दिस इन्फेक्शन बैक्टीरिया इट वाज नॉट देयर इन इंडिया. सो ये जो जैसे होता है आपका चिकन पॉक्स okay, virus, it was not in India. So these Britishers they came with the chicken pox and उन्होंने क्या किया कि होता ना इंडिपेंडेंस के पहले वो अपने ऊपर अत्याचार करते थे. तो मतलब अत्याचार करने की एक सीमा होती है, तो वो सब सीमा तो लांग दिए थे. जैसे फॉर एग्जांपल उसको एक टर्म है बायोवार. जैसे कोरोना के पीरियड में बोला था बहुत सारे लोगों ने ये चाइना का बायोवार है. They have spread the coronavirus to India so that Indian economy will collapse and they will take over India like that. So it is a partially true और ये होता भी है. As like और ऐसा ही था कुछ. जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका चिकन पॉक्स, सो चिकन पॉक्स वायरस इट वाज केम टू इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. सो उन्होंने क्या किया कि उनके कुछ पेशेंट थे चिकन पॉक्स के, उनको जो बेडशीट था, so whatever bedsheet they was using, so that bedsheet they have sent to Indian. मतलब वो जो कैदी थे उनको ये बेडशीट डाल दिया और उनको छोड़ दिया. बाद में तो उनको इन्फेक्शन हो गया, वो कैदी घर पे जाके घर वालों को इन्फेक्शन हो गया और बाकी वो स्प्रेड हो गया सब कुछ. चिकन पॉक्स, so that is known as a biovar. So chicken pox was caused by varicella zoster virus. Then Salmonella typhi will cause typhoid fever. Salmonella typhi. And Rocky Mountain spotted fever is caused by rickettsia. Rocky Mountain spotted fever is caused by rickettsia. Rickettsia is nothing but the microorganism which is having properties in between the bacteria and viruses. ये दोनों के बीच का प्रॉपर्टी होता है. इसके ऊपर GPAT 2023 में क्वेश्चन है. Microorganism which is having bacterial as well as virus property. There is a rickettsia. Rickettsia is between bacteria and virus. Who is the microorganism which causes the whooping cough? Whooping cough is also again a बहुत ही बड़ा पैंडेमिक एपिडेमिक था उसमें. whooping cough मराठी में इसको बोलते हैं टांगा खोला. मराठी में इसको बोलते हैं टांगा खोला. मतलब इतना खासियत है उसको कंट्रोल नहीं होगा. whooping cough is caused by Rhodotella pertussis.
Protidella pertussis. Remember this organism, Protidella pertussis. ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. Protidella pertussis. And Chlamydia trachomatis cause venereal disease. Chlamydial infections. Corynebacterium diphtheria will cause diphtheria. इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है मालूम है आपको? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है अभी GPAT 2023 में. Dick test and Seek test. They are the identification test for Corynebacterium diphtheria. Already देखा है आपने. क्लास में एक तो जाके देख लो. In Mycobacterium tuberculosis will cause tuberculosis. There is an infection of your bronchioles and lungs. Acid caused by saline. Then Helicobacter pylori will cause the peptic ulcer in the peptic and duodenal ulcer. 99% of duodenal ulcers they are caused by H. pylori. Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae will cause gonorrhea. It is again STD, sexually transmitted disease. Yersinia pestis is the microorganism for plague. अभी जो DHS का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर प्लेग. यहाँ ये प्लेग का भी पहले बहुत आया था सर. इट वाज अ वेरी डेंजरस एपिडेमिक. प्लेग बहुत ही आया था प्लेग. So it was caused by Yersinia pestis and the positive organism is Yersinia pestis and the vector is nothing but the rats. चूहे जो होते हैं चूहे उसका वेक्टर होता है rats. Caused by Yersinia pestis. Streptococcus viridans heart infection करता है. Yellow fever is caused by flavivirus. These are the few examples of organisms and their respective infection caused or disease caused. वैसे तो बहुत सारे एटलीस्ट को इतने मालूम होने चाहिए, बाकी भी देखेंगे. माइक्रोस्कोप के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है. माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट इट इज अ ऑब्जेक्ट, you can say it is an instrument to visualize the microorganisms or things in the micron size. So microscope to observe the structure which is not observed by naked eyes. So you need a microscope. There are different microscope. पहला होता है लाइट माइक्रोस्कोप. Am I audible to you clearly? Audible आएगा. So light microscope. So in this ordinary light is a source of light. When ordinary light is used, so it has a maximum resolution approximate 0.2 micron. मतलब क्या 0.2 micron साइज तक के ऑब्जेक्ट आपको इससे दिख सकते हैं. So it has a maximum resolution of 0.2 micron. It is a commonly used microscope, commonly employed microscope. Then you have different varieties of light microscope. Like for example, bright field microscope is there. Then dark field microscope is there. Then phase contrast microscope is there. Then fluorescent microscope is also there. In the light microscope, you might have used this cedar wood oil. You might have used cedar wood oil. और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका. Cedar wood oil used to give magnification about 100 times. Cedar wood oil when it is used, so it will magnify the things 100 times. Because उसका जो refractive index होता है उसके कारण. So because of the refractive index of cedar wood oil, so it magnifies the things under the microscope. बहुत छोटा चीज है माइक्रोस्कोप में, ऑर्डिनरी में दिखने का. जब तक आप cedar wood oil यूज नहीं करेंगे, because cedar wood oil is used for the magnification and it will magnify the magnification strength of cedar wood is 100x ऐसा आता है. तो क्वेश्चन आ चुका है GPAT में. So what is the magnification power of cedar wood oil? Magnification power of cedar wood oil. Magnification power कितना है? इतना 100x. देखो आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा होगा तो 10x लिखा है, वहाँ पे 5x लिखा होता है. मतलब lens of 10x zoom, 5x zoom, 100x zoom. So likewise that. So if cedar wood oil is used, so it will give you 100 times magnification. Then आता है transmission electron microscope. So you need a very fabulous resolution, approximately 0.5 nanometer का भी resolution होता है. 0.5 nanometer. Very short wavelength direct electron beam is used. Short wavelength electron beam is used as a source of light. Next होता है differential interference microscope. So it is used to obtain the 3D colored images of micron size. Then आता है scanning electron microscope. Due to more advancement
ये तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक है एडवांसमेंट है। सो रिमेंबर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक दो है। बाकी मैं आपको मालूम ही होगा पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, आईपीस क्या होता है, ये क्या होता है, लेंस क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है। तो वो आप बुक में देख लो, वो तो उसके ऊपर वैसे भी क्वेश्चन में आते हैं। पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, आईपीस, लेंस, कंडेंसर, बॉडी, हाउसिंग, स्टेज, वो आपके सेमेस्टर के लिए, जीपैट के लिए नहीं होता। बट वो आपको मालूम होना चाहिए, कभी उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। जीपैट वालों को कुछ भरोसा नहीं है, आपने कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना है, वो चीज पढ़ना जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। पहला है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? सो आउटर अपीयरेंस। So bacteria are classified by there are different ways to classify the bacteria. So depending upon the their morphology, depending upon the uh, temperature in which they are, depending upon the favorable temperature in which they are surviving, or depending upon their capacity to utilize the oxygen or not, aerobic and anaerobic. There are different ways to classify the bacteria, but mostly this morphological classification is important. So depending upon the shape, तो बैक्टीरिया का शेप के ऊपर है ना, उसका क्लासेस होता है। तो पहला है कोकाई। सो दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर हैविंग स्फेरिकल शेप और ओवल शेप। उनका एक राउंड शेप का सेल होता है, राउंड और ओवल शेप सेल होगा, लाइक अ बेरी, जैसे ब्लूबेरी होता है उस टाइप का। Microscopes, they have interest. So in that also focus, you have different type of focus. What is the diplococci? Diplococci, they are nothing but they will divide by binary fission. उनका binary fission से division होता है and in a one plane. So they will divide in a binary fission in a one plane. So example is a pneumococci. Pneumococci क्या है? Pneumococci causes the pneumonia. Pneumococci will cause pneumonia. And streptococcus. So they are arranged in a chain. Cocci arranged in a chain. Example: Streptococcus pyogenes and Streptococcus viridans. Streptococcus pyogenes and Streptococcus viridans. And Staphylococcus. Cocci arranged in the clusters. एक गुच्छे में arrange किए जाते हैं। So उसका अगर ऐसा shape है तो उसको Staphylococcus बोलते हैं। So example is Staphylococcus aureus, aureus and yes albus. उसका और एक टाइप होता है टेट्राकोकस। सो दे आर अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 4। चार कोकाई अरेंज हो गए, उनको बोलते हैं टेट्राकोकस। डिप्लोकोकस मतलब डाई, दो रहेंगे बाइनरी फिशन से, वो डिवाइड होते हैं इन वन प्लेन। देन स्ट्रेप्टोकोकस अरेंज्ड इन चेन, देन स्टेफाइलोकोकस अरेंज्ड इन क्लस्टर्स, टेट्राकोकस अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 4। सो एग्जांपल इज माइक्रोकोकस टेट्राजोन। So these are the cocci. Cocci मतलब क्या? They are having oval shape and round shape small bacteria. उनका शेप अगर देखना है तो बुक में दिया है आपको डायग्राम में, आपको मोबाइल पे भी आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। Then second is nothing but the bacilli. Bacilli means it is a structure like a stick or rod. जैसे ये लाइन लिखा है, stick or rod. They are the stick or rod shaped cells, Bacillus anthracis. Example is a Bacillus anthracis. So if the length and width of that, है ना, length and width इसका सेम ही है। So if length and width of the bacilli is equal, then it is known as a cocobacilli. Cocobacilli. Example is nothing but the bacilli. Then vibrios, vibrio नाम का बैक्टीरिया। Vibrios they are comma-like structure, comma है ना, जैसे यहाँ पे comma लिखा है। Small comma shaped, they are curved rod. Example vibrio comma और vibrio collar. Vibrio comma, vibrio collar. They are a comma shaped bacteria. Right? Then next होता है spirilla. So spirilla मतलब long rod with several curves or coils. Spirilla. So long rod with several curves or coils, helical in shape, rigid bodies. Example Spirullinum rupum. Then next होता है spirochete. Spirochete, they are having slender and flexuous spiral form. Example है इसका Treponema pedilium. Treponema pedilium जो आपका सिप्लिस करता है। Leptospira borilla. Leptospirus करता है। Then actinomycetes. So they are having branching filamentous
bacteria. Rigid cell wall is there. Example streptomyces. So it is actinomyces. Next the mycoplasma. So mycoplasma. Mycoplasma क्या होता है? Cell without cell wall. Cell without cell wall. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Cell without cell wall is known as mycoplasma. Occurs as a round or oval bodies with the interlacting. These are the morphological classification of bacteria. Bacteria is type के होते हैं. So you can see in the diagram in the books. Now based upon the pH, in which they require pH, based upon the pH requirement of their survival, based upon the optimum pH value, microorganisms they are also classified in. So microorganisms based upon the pH required, they are classified as acidophils, neutrophils and alkalophils. Acidophils मतलब क्या है? So pH required for the growth is a pH from 1 to 6.5. So acidophils they will grow at a pH 1 to 6.5. For example, Thermobacillus theoxant, Thermobacillus theoxant, that is pH required is 2 to 3.5. Lactobacillus acidophilus, pH required is nothing but 5.8 to 6.6. That's why they are known as acidophils. Acidophils मतलब क्या है? उनको acidic pH चलेगा. So they will grow at acidic pH. That's why they are known as acidophils. Example they are acidophils. The neutrophils, they will grow at the neutral pH, or the medium of pH should be neutral. So in this 6.5 to 7.5 range. So neutrophils कौन सा? E. coli, Salmonella typhi and other organisms. They are neutrophils. Alkalophils मतलब क्या? They require a basic pH. So pH 7.5 to 14. pH 7.5 to 14. So alkalophils. So they will grow at an alkaline pH. That's why alkalophils. तो एग्जाम्पल है उसका विब्रियो कोलरा. pH कितना लगता है उसको? 9. So based upon the nutrition requirement also, है ना, based upon the oxygen requirement also, aerobic bacteria, anaerobic bacteria. So those bacteria which requires the oxygen known as aerobic, those does not require the oxygen known as anaerobic. So based upon the nutrition requirement, based upon the structure, based upon the morphology, based upon the pH, based upon the temperature also they are classified. So based upon the temperature, very important question आ चुका है इसका. So temperature range for bacterial growth, temperature requirement for bacterial growth. बैक्टीरिया ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया को भी टेम्परेचर लगता है. बैक्टीरिया नीड अ टेम्परेचर, है ना. अगर आपने कुछ फ्रीजर में रखा है, so why things in a freezer or why groceries in the freezer or a refrigerator they last for long time? There is a reason, because फ्रीजर में टेम्परेचर कम होता है ना. So mostly ना फ्रीजर में बहुत टेम्परेचर कम होता है, 2 to 8 कूल टेम्परेचर होता है. Most of the bacterial enzymes, most of the bacterial metabolism that needs temperature more than 20 degrees Celsius. बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी जाके वो अपना मेटाबॉलिज्म करेंगे, तभी जाके वो अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है. और इफ यू, जैसे आपने एक केक लाया, आज केक लाया, अभी नहीं खाना है, कल खाना है, और वैसे रख दिया आपने, कल उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, कल या परसों. और वही केक आपने फ्रीजर में रख दिया तो नहीं होती, होती नहीं, ऐसा नहीं होती है, लेकिन टाइम लगता है उनको, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में होंगे. Why? Because at that temperature the metabolic enzymes, the enzyme required for the metabolism, okay, so that is not active. That's why bacteria will not grow. So temperature range for bacterial growth is again very important parameter. So depending on that also bacteria are classified. Temperature range for bacterial growth, highest temperature at which bacteria will have a rapid growth during short period is known as the optimum growth temperature. तो optimum growth temperature क्या होता है बैक्टीरिया का? So optimum growth temperature is nothing but the temperature, the maximum temperature at which bacteria will show a rapid growth. The maximum temperature at which bacteria will show a rapid growth in a short period. What is the optimum temperature for the? So depending on that, so bacteria are classified into different classes. Right? So group. First class, obligate psychrophiles. Obligate psychrophiles. तो उनके लिए मिनिमम
टेम्परेचर लगता है 0 to 5. They can require the minimum temperature 0 to 5 degrees Celsius and the maximum temperature 20. So obligate saprophytes they will survive 0 to 20 degrees. But optimum temperature required is nothing but 10 to 15. 10 to 15 degrees Celsius. मतलब क्या कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में ये ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे. So they will grow at a optimum temperature. Mostly ना इस रेंज 10 to 15 degrees Celsius में ग्रोथ क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगा. So known as obligate saprophytes. तो एग्जांपल क्या है देखो, Vibrio sacrothras, Vibrio sacrothras, Vibrio sacrothras ये बैक्टीरिया का नाम है. So it is an obligate saprophyte. Facultative saprophytes. Facultative saprophytes. Again, minimum temperature क्या लगेगा 0, है ना? minimum temperature लगता है हमको 0 और maximum 35 degrees. Maximum 35 degrees. But optimum temperature for facultative saprophytes is nothing but 25 to 30. मतलब maximum growth कब दिखाएंगे ये temperature के ऊपर maximum. They will have maximum growth at a 25 to 30 degree. But they can survive at a 0 to 35 degrees Celsius. They will mostly divide in a 25 to 30. So that's why facultative are saprophytes. Example is nothing but the Pseudomonas fluorescens. Pseudomonas fluorescens. Next one is nothing but the mesophytes. Mesophytes. Mesophytes also they will grow minimum temperature उनकी growth के लिए मतलब they can survive at a 15 to 20 degrees Celsius. And they will also survive at a 65 degrees Celsius. But the optimum growth temperature is nothing but 35 to 40 degrees Celsius. So they will show maximum growth at this temperature. Mesophytes. Example is nothing but the Corynebacterium diphtheria. So diphtheria का बैक्टीरिया होता है वो. Then facultative thermocols. Facultative thermocols. They can they will survive at a 35 to 40 degree up to 65 degree. And their optimum temperature is nothing but 50 to 55 degree Celsius. So they will have maximum growth at a 50 to 55 degrees. So next आता है obligate obligate thermophiles. So क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है obligate thermophile रिसेंटली आ चुका है. So they will अगर मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर उनके लिए कितना लगता है कम से कम 50 डिग्री to 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये ग्रो करेंगे. इसके नीचे वो नहीं करेंगे. एंड मैक्सिमम इतने तक वो ग्रो करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मतलब 80 तक वो ग्रो कर देंगे. ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है उसका 65 to 70 डिग्रीज. दे विल ग्रो रैपिडली एट दिस 65 to 70. एग्जांपल इज द थर्मस एक्वाटिकस. एग्जांपल क्या है थर्मस एक्वाटिकस. थर्मस एक्वाटिकस ये गर्म पानी में भी जिंदा रहता है. ये जो है ना साला गर्म पानी में भी. और उसके कारण क्या हुआ सो द रीजन व्हाई इट सर्वाइव्स एट 80 डिग्री and from this bacteria there is an isolation of an enzyme. There is an isolation of one enzyme known as a DNA polymerase. So from this thermus aquaticus packed DNA polymerase enzyme was isolated. Now that enzyme is used in the PCR polymerase chain reaction. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे. Obligate thermophile is a thermus aquaticus. It can survive up to 90 मतलब maximum survive करता है 80-90. एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका है इसका तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 65 to 70. The enzyme isolate from this is used in the PCR known as the tag DNA polymerase. Am I audible to you? तो याद रखना. Yes. So important है depending upon the pH, acidophil, neutrophil, alkalophil, morphology of constitution, depending upon the temperature requirement and depending upon the oxygen requirement, they are classified as a aerobic and anaerobic. Okay. Next we'll see parts of bacterial cell. So bacterial cell के parts of bacterial cell. Bacterial cell. What is bacterial cell? So bacterial cell will have okay. Now first of all, our human cell and bacterial cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Bacterial cell is known as a prokaryotic cell.
Bacterial cell is known as a prokaryotic cell. Human cell is known as a eukaryotic cell. There is a difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Right? That difference you can go and read from book. But bacterial cell is known as a prokaryotic cell. Which consists of a cell wall, then cytoplasm. सेल वॉल होगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म होगा, उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हो गई, सेरुम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मटेरियल, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स. These are the part. Okay? Gram positive and gram negative bacteria will have a different cell wall. In the cell wall, there is a difference between gram positive and gram negative bacteria. So we are going to see in the detail, don't worry. So gram positive, gram negative bacteria. In gram positive bacteria, you have thick cell wall. In case of gram negative bacteria, you have thin cell wall. In case of gram positive, you have huge layer of peptidoglycan. उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर ज्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर कम होता है. That's why penicillins they are mostly effective in the gram positive bacteria because they inhibit the cell wall synthesis by binding to peptidoglycan layer. Capsule and slime. Capsule और slime क्या होता है? What do you mean by capsule or what do you mean by slime? These are the term related to bacterial cell. Slime and capsule. Slime आपको किसने बोला नहीं होगा. कैप्सूल में भी आपको मालूम होगा आउटर कवरिंग ऑफ योर स्लाइम क्या होता है. कैप्सूल और स्लाइम. कैप्सूल इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ एनवेलप प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल के बाहर एक एनवेलप होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? कैप्सूल. कैप्सूल इज सम सॉर्ट ऑफ एनवेलप और कवरिंग, आउटर कवरिंग. इफ दैट आउटर कवरिंग और एनवेलप और कोटिंग बोल सकते हैं. आउटर कोट ऑन बैक्टीरियल सेल इज अ कैप्सूल. Outer envelope capsule, outer covering capsule. Now this covering envelope or coat, if it is loose, या अगर ये covering जो loose है, so if it is loose, it is too loose, and it can diffuse into, which often diffuses into a corresponding medium, है ना. जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, अगर बैक्टीरिया के कैप्सूल जो है, आउटर कवरिंग जो है, आउटर कोट जो है, आउटर कोटिंग जो है, वो अगर डिफ्यूज होता है किसमें? सराउंडिंग मीडियम में. इफ दैट आउटर कवरिंग और आउटर कोटिंग कवरिंग और एनवेलप और कैप्सूल इज diffusible in the medium, then it is known as a slime. It is known as a slime. This is slime. These structures helps the bacteria to survive in the extreme condition. तो ये कैप्सूल, स्लाइम, है ना, स्पोर्स, है ना, there are three कैप्सूल, स्लाइम, स्पोर्स. ये क्या करते हैं? These structures will help the bacteria to survive at the extreme condition. जैसे मान लीजिए, so if बैक्टीरिया का फेवरेबल कंडीशन है आपका, से फॉर एग्जांपल 20.30 डिग्री सेल्सियस 40, है ना, 20 to 40 डिग्रीज के ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है मीडियम में, तो उसको न्यूट्रिशन है तो दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन. बट मान लीजिए कभी कभी धूप काले में बहुत ज्यादा टेम्परेचर 48 डिग्री है, सो एट द टाइम बैक्टीरिया मरना चाहिए, तो बैक्टीरिया मरता नहीं है. सो व्हाट हैपेंस, these slimes, capsules or spores, they helps the bacteria to survive in the extreme condition. बैक्टीरिया खुद के ऊपर ऐसा कोट बना लेगा, एकदम टफ कोट, उसके अंदर टेम्परेचर जाएगा नहीं. दैट इज नोन एज अ एक्सट्रीम कंडीशन. फ्लैजेला. बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? फ्लैजेला. व्हाट इज द फ्लैजेला? इट इज नथिंग बट द ऑर्गन फॉर लोकोमोशन. याद रखना है, ऑर्गन फॉर लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया विल मूव थ्रू ए फ्लैजेला, फिम्बरी और पिलाई. फिम्बरी और पिलाई, also known as the fimbri or pili, also known as the sex pili, because of they are involved in the, they are going to their synthesis predominantly directed by sex bacteria. उनका genetic material transfer होता है पिलाई के थ्रू, which is having a major role in the human infection spreading. बाद में आता है आपका phases of growth of microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसे होगा? So different phases of microbial growth. Microorganism will grow at a different phases. Suppose if you are isolated or inoculated. Suppose if you are inoculated a E. coli. E. coli बैक्टीरिया आपने inoculate किया किसमें? ग्रोथ मीडियम में. जैसे ना अगर मीडियम, इसके ऊपर आपने E. coli का inoculation किया. Now E. coli will not start dividing immediately. E. coli will take
its time to adapt the condition. तो जब से आपने inoculate किया, when you inoculated the E. coli on the medium, so E. coli will adapt the medium. It will take initial time. It will take adjustment. So initial adjustment period, initial adaptation time. So at that time, there is very little growth of bacteria. You can say there is no growth of bacteria. That phase is known as lag phase. That phase is known as lag phase. Lag phase क्या होता है? Initial adjustment period, initial adaptation period. So bacteria will adapt the condition. Bacteria का layer environment नया रहेगा, वो adapt करेगा. जब नए जगह पे जाते हो तो थोड़ा चिड़चिड़ रहते हो, नए जगह पे अगर आप गए, जैसे मान लीजिए आपके मामा के पास गए, पहली बार गए, पहले 2-4 दिन आप एकदम शांत रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि सब नया है, आदमी नए है, मामा की लड़की है लेकिन नहीं है, बात कैसे करें. तो बाद में जाके 2-3 दिन के बाद में फिर आप शुरू हो जाते हो आपका काम जो भी है. You take a time for particular adjustment. So bacteria also will take a time for adjusting the new environment. That is known as a lag phase. और log phase next phase is nothing log phase. Log मतलब क्या? There is a logarithmic growth. There is a logarithmic growth of bacteria. Logarithmic growth मतलब क्या? 10 raised to. Logarithmic growth मतलब क्या? So 10 raised to 1, 10 raised to 2. So logarithmic growth. So it is also known as a exponential growth. So that's why log phase or logarithmic growth or exponential growth of bacteria. So rapid exponential growth of microorganisms. याद रखना phase के ऊपर क्वेश्चन आता है. ये I think GPAT 2023 में आया है. 10 raised to 1, okay, 10 raised to 1 ऐसा क्वेश्चन है. 10 raised to the logarithmic growth of bacteria that occurs in the which phase of bacterial growth cycle. So log phase. Then a parastationary phase. It is a leveling of growth of microorganism and you will get a straight line due to depletion of nutrient. So if you plot a time, okay, if you plot a time versus growth, अगर आपने growth y axis पे और x axis के ऊपर time ऐसा plot करके अगर growth cycle growth का observe किया बैठे, initially growth नहीं होगा, बीच में growth होगा, बाद में फिर से straight line होगा, बाद में नीचे फिर से line आएगी. क्यों? Initially lag phase is there, adjustment period is there, then log phase is there, exponential growth is there, then third is the stationary phase. Stationary मतलब क्या? जितना growth हो रहा है, growth and death stationary रहेगा. तो जितना growth हो रहा है, उतना death हो रहा है, तो stationary. So leveling of growth of organism, you will get a straight line due to depletion of nutrition. So decline phase क्या होता है? Decline phase means there is a decrease in the growth of bacteria. Decline or decrease in the growth of microorganisms because of the lack of nutrition. अभी जो भी nutrition है, जो भी मीडिया था उसका nutrition खाली है बैक्टीरिया, अभी nutrition बचा नहीं. Lack of nutrition and accumulation of toxic waste material. There is a decline phase. Bacteria will multiply by binary fission or budding. Binary fission budding. उसने दिया है. If you want to go, you can read. So these are the bacterial phase life cycle. Are you getting or not? समझ रहे आपको? So this one is known as a bacterial cell in your diaphragmatic way. So this one is known as a capsule. This purple color, you can say it is a capsule. There is the outer covering of bacterial cell. It is known as a capsule. Okay? It is known as a capsule. And below the capsule there is a cell. For that there is a plasma membrane. For that there is a cytoplasm. And in the cytoplasm you have chromosomes. You have DNA, RNA. DNA, RNA, chromosomes and ribosomes. Ribosomes sequencing हो गए. ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं उस तरीके से राइबोसोम हो गए. Chromosomes, okay, it is a chromosome. ये मेन क्रोमोसोम होता है जो लंबा दिख रहा है आपको, स्पाइरल. So spiral and long chromosome is known as the main chromosome on which DNA is present. But in the bacteria, along with the main chromosome, along with the genetic material, so non-coding, a small circular DNA is present. A small circular DNA is present in the bacteria, and this is not having any genetic material. Small extracribosomal circular DNA present in the bacteria, known as a plasmid. This plasmid is a,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लाज्मिड के ऊपर ही सब कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा है। ये प्लाज्मिड होता है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular DNA present in the bacteria. Small extra chromosomal circular DNA present in the bacteria known as a plasmid. And it is used as a vector. It is used for the uh, insertion or deletion of desired DNA. प्लाज्मिड का एक प्रश्न होता है origin of sequence, an operon, origin of sequence, antibiotic resistance, सब प्लाज्मिड इंसर्ट किया जाता है। desired DNA आपको उसको डाल सकते हो, you can target the DNA, you can get a recombinant DNA, that is a plasmid. Now whatever these parts are there, they are known as a pili. These parts on the bacterial cell known as a pili. They are responsible for the infection. Also they are responsible for the transmission of genetic material from one bacteria to another through a sex pills. Right? Now this is known as a flagella. This part is known as a flagella. This part is known as a flagella. And flagella is nothing but the organ for locomotion. Organ for locomotion of the bacteria. Okay. Depending upon the arrangement of this flagella, so bacteria can be divided. Bacteria का division, bacteria का class section बहुत सारे types होता है. Say flagella है. Depending upon the presence of flagella on bacterial cell, एक side में है तो कैसा, दोनों side में तो कैसे, all over cell में है तो कैसा. So depending on that, depending on the arrangement of flagella on a bacterial cell, they are also classified. Okay. So we'll see in upcoming part. Then this one is known as the growth cycle of bacteria. Okay. If you plot the time versus the growth time versus the growth, मतलब the number of cells. So after inoculation, isolation, it will take us some time. During this period, there is no growth, or you can say only little growth is there. So this is known as a lag phase, or it is also known as initial adjustment period. There is an exponential growth. There is a logarithmic growth. यहाँ पे growth देखो बढ़ गया है, तो यहाँ पे multiplication हुआ. So after initial adjustment period, there is a logarithmic growth or exponential growth known as a lag phase. Known as a log phase. Lag phase. इसके बाद में log phase. log phase or exponential phase, and then stationary phase. Stationary phase मतलब क्या है? This phase is known as stationary phase. यहाँ पे क्या है? Straight line है. Why? Because growth rate and death rate is equal to growth rate and death rate they are equal. That's why यहाँ पे थोड़ा nutrition भी कम होता है, and that's why number of bacteria growing is equal to number of bacteria dying. That's why you get a straight line, known as stationary phase. And then there is a decline phase. Decline phase मतलब है यहाँ पे क्या है? So mutations are depleted. यहाँ पे जो भी nutrition है मीडिया में वो खत्म हो चुका है, and there is a accumulation of toxic waste. That's why decline phase. Are you getting or not? समझ आपको? So you can see over here, this is known as a bacterial cell. Then ये क्या है? Bacterial cell है. Bacterial cell. So outer wall is nothing but the capsule. Then cell wall is there. Cell membrane. Then ribosomes are there. Mesosomes are there. This is known as a nucleus. Nucleus के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है. सबको न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम. This is known as a flagella. This one is known as a flagella. These are known as a pili. Yes, sister. Now you can see. Okay. So depending upon the arrangement of flagella in the cell, so they are classified into different ways. Like monotrichate. So if flagella is only at one end of cell, flagella का एक ही end के ऊपर है cell. Monotrichate. But if the flagella is on a both side of cell, it is an amphitrichate. यहाँ पे flagella यहाँ पे भी है amphitrichate. If flagella is at a one end and it is in a spiral, okay, like manner, spiral like manner. So leucotrichate. And if flagella is present all over the cell, petritrichate. So depending upon the arrangement of flagella on the cell, so they are also classified. So arrangement of flagella in a bacteria. Capsulated bacteria. Capsulated bacteria showing the nuclear material is in relation to cytoplasm, cell membrane to cell. Capsule क्या होता है? It is a outer envelope or outer coat or
outer covering on the bacterial which helps to survive the bacteria in an extreme condition. Next is a different staining technique. So you can identify the bacteria by using staining technique. बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, स्टेनिंग करना पड़ता है. So you can identify the bacteria by using staining technique. So what are the different staining techniques that we are going to see? So staining दो टाइप का होता है मोस्टली, simple staining and differential staining. Mostly staining are classified into three types. Sorry, not only two. तीन टाइप का स्टेनिंग होता है. कितने टाइप का? तीन टाइप का. पहला है आपका सिंपल स्टेनिंग, पहला है आपका सिंपल स्टेनिंग, दूसरा है आपका डिफरेंशियल स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, तीसरा है आपका नेगेटिव स्टेनिंग. सिंपल स्टेनिंग होता है, इसमें सिंपली आपका क्या है, डाई, जो डाई यूज करें. सो इन द सिंपल स्टेनिंग ए डाई colorize the bacteria. Dye will, okay, so whatever color or dye you are using for staining, that solution will be taken up the bacteria, bacteria will get colored. That is simple staining. Differential staining means what? Differential staining means here you are using two dyes, here you are using two dye, here you are using only one dye. Differential staining मतलब क्या? So first dye will not stain the bacteria, which known as a primary dye. Bacteria will be stained by another dye known as a counter stain. So such kind of staining is known as a differential staining. And you know, that one is a negative staining. That one is a negative staining. इस टाइप का स्टेनिंग हो रहा है. एंड ग्राम स्टेनिंग इज नथिंग बट द टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग. इसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है. ग्राम स्टेनिंग इज नथिंग बट द टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग. रिमेंबर, ग्राम स्टेनिंग इज नथिंग बट द टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग. सो फर्स्ट विल सी ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ये आपको मालूम है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है. जी पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया and gram negative bacteria. So gram staining is used to distinguish between gram positive and gram negative bacteria. So they mostly differs in the composition of cell wall. उनके cell wall में जो composition है उसके ऊपर को differentiate किया जाता है. So in the gram positive you have large peptidoglycan layer which is polysaccharide. In the gram negative you have less peptidoglycan, more lipid. Gram staining mostly they will stain the gram positive bacteria. You might have done the practical in your college. So you are using two dye. So crystal violet is used as a primary dye. Primary stain is nothing but the crystal violet. Crystal violet is a primary stain, and gram positive bacteria will stain by crystal violet only. Then second thing you are using the gram staining, iodine. Second thing is nothing but the iodine. So iodine is nothing but the mordant. Iodine is nothing but the mordant. And third thing you are using in the gram staining known as alcohol. Alcohol is used as a decolorizing agent. Fourth thing is nothing but the saffron, which is known as a counter stain. इसके ऊपर दो तीन बार क्वेश्चन आए. So question will be like this: what is the primary stain used in the gram staining? Okay, primary stain used in the gram staining. तो आंसर होगा आपका crystal violet. Primary stain used in the gram staining is nothing but the crystal violet. Primary stain क्या है आपका? Crystal violet. Crystal violet. One question covered. Okay. What is the role of iodine in the gram staining? Another question. So it serves as a mordant. Third question. Alcohol is used as a alcohol is used in the gram staining as a, it is a decolorizing agent. What is the counter stain? Saffron. इसके ऊपर दो तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया. Gram positive bacteria last year. Gram positive bacteria will appear as a purple or dark violet in color. Gram positive bacteria after gram staining will look like a purple or dark violet in color. Gram staining करने के बाद में gram positive bacteria कैसे दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप के नीचे? पर्पल कलर का दिखेगा और डार्क वायलेट कलर का दिखेगा, बिकॉज इट टेक्स द क्रिस्टल वायलेट dye. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि उसमें सेल वॉल थिक होता है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर ज्यादा होता है, और ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन होने के कारण वो प्राइमरी डाई जो आपका क्रिस्टल वायलेट वो ले लेता है और उसका स्टेन कर देता है. वो इट विल लुक लाइक अ पर्पल और डार्क वायलेट इन. बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो नहीं लेगा. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल नॉट स्टेन. बाद में फिर आपको क्या करना पड़ता है? बाद में आपको मॉडर्न डाई रखना पड़ता है, बाद में उसको अल्कोहल से डीकलराइज करना पड़ता है, बाद में काउंटर स्टेन करना पड़ता है. एंड काउंटर स्टेन दे आर टेकन बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया.
gram negative bacteria appears as a red in color. Gram negative bacteria appears as a red in color because they takes a counter stain. Clear? Yes or no? डायग्रामेटिक वे से नहीं बोला मैंने, यहाँ पे डायग्राम वगैरह वो सब आपके बुक्स में लिखा है. आर यू गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग. नेक्स्ट इज मतलब एसिड फास्ट स्टेनिंग. सो इट इज यूज्ड फॉर द staining of Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium leprae, because both are known as acid fast bacteria and they are not stained by simple staining or ground staining. They are stained by acidic dye. They are stained by acidic dye. That's why they are known as acid fast. Acid fast staining is there. So dye used is nothing but the carbophyrin red. Carbophyrin red. So dye कौन सा यूज करना है? Carbophyrin red. You have to remember. कौन सा dye यूज करते हैं? Dye used in the acid fast staining. Carbophyrin dye. Okay, that is red. This is acid. Okay, it is dissolved in the acidic alcohol. Acid fast bacteria appear as a red in color. Acid fast bacteria जो है वो red color में आता है. Non-acid fast bacteria will be colorless. So acid fast bacteria will appear as a red in color. Non-acid fast bacteria will be colorless. The acid fast staining. पहला है ग्राम स्टेनिंग, दूसरा है acid fast. Third is nothing but the Gill-Nielsen staining. Third one is nothing but the Gill-Nielsen staining method. Used for staining of Mycobacterium tuberculosis again. The smear is rinsed with the acetic alcohol mixed and a solution of carbophyrin is applied. As a result are like above. जो acid fast staining होता है और Gill-Nielsen staining होता है वो सेम ही है, बस मेथड अलग अलग है. नेक्स्ट आता है कैप्सूल स्टेनिंग. कैप्सूल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल. नेगेटिव स्टेनिंग फॉर कैप्सूल. तो बैक्टीरियल कल्चर आर मिक्स्ड विद द निग्रोसिन सॉल्यूशन और इंडियन इंक. डाई कौन सा है यहाँ पे? निग्रोसिन और इंडियन इंक. नाउ यू हैव टू ऐड सैफरन. नाउ सैफरन इज एडेड. Safranin is added. Capsule being a different chemical composition, it is not stained by a biological dyes, and therefore most of them appears as a hole just surrounding the stained microbial cell. जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल वो स्टेन नहीं होता है डाइज. जो डाई यूज कर रहे हैं उससे कैप्सूल स्टेन नहीं होगा, तो बैक्टीरिया स्टेन होगा. बैक्टीरिया स्टेन है, कैप्सूल स्टेन नहीं है, तो वो अपीयर कैसे करेगा? सो कैप्सूल विल अपीयर एज अ होल surrounding the bacterial cell. Next up, endospore staining. So endospore staining, Schaffer-Fulton endospore stain. Schaffer-Fulton endospore stain. So endospore मतलब है ना, there are two type of spore, exospore, endospore. Endospore is heated with the mergentine green dye. It is washed clear the dye. Finally, safranin is added counter stain. Endospores will be stained as a green. Then next होता है flagella staining. Carbophyrin and modern iodine is used for the staining of flagella. सबसे delicate process में होता है hard staining is nothing but this flagella staining. Hard staining, flagella staining. Gram staining, acid fast staining and differential staining. Gram staining क्या है? Differential staining. Acid fast क्या है? Differential staining. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है staining technique. पूरा स्टेनिंग मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको यहाँ पे दिया है, क्योंकि यहाँ पे तीन क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ लेक्चर ले नहीं सकते अपने इसके. हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता, ये 2 या 3 क्वेश्चन. नाउ कोकाई. कोकाई मतलब क्या होता है ना? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. आई टोल्ड यू. सो ग्राम, एग्जांपल ऑफ ग्राम नेगेटिव कोकाई. याद रखना एग्जांपल्स ग्राम नेगेटिव कोकाई है. नेसेसिरिया गोनोकोकस, नेसेसिरिया मेनिंजोकोकस. नाम में रखा है, आप बोलते हो ना नाम में क्या रखा है, इसके क्या है? नेसेसिरिया मेनिंजोकोकस. तो ये क्या करता है? मेनिंजाइटिस. मेनिंजोकोकस बिकॉज मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस मतलब क्या? इन्फेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ ब्रेन, मेनिंजाइसिस ऑफ ब्रेन. बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ब्रेन में हो गया तो मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको, और वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसको एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं. सो नेसेसिरिया गोनोरी विल कॉज गोनोरिया डिसीज. These are the gram negative cocci. Gram positive cocci कौन है? देखो, gram negative Streptococcus, Pneumococcus, Micrococcus, Sarsinia. ग्राम पॉजिटिव है, दोनों में भी ग्राम नेगेटिव. क्या बुक में भी गलत रहता है? बुक में सॉरी, ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव है.
Gram positive Neisseria gonococcus, Neisseria meningococcus. Gram negative Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Micrococcus and Sarsinia. Then bacilli जो होता है bacilli, gram positive, gram negative. पहले gram negative bacilli. Pseudomonas, Pseudomonas DC. Pseudomonas क्या है gram negative? Enterobacteria क्या है gram negative? Brucellosis, Brucellosis gram negative bacilli. Acromobacteria again क्या है gram negative bacilli. तो Pseudomonas enterobacteria, enterobacteria क्या करता है? Enteritis करता है, enteritis, infection of intestine. Then gram positive bacilli. इसमें दो है, sporulating bacteria and non-sporulating bacilli. Spore जिसको बोलते हैं sporulating, formation of spores around the bacteria. Bacteria क्या है यहाँ पे, ये spore बन रहा है. Spore is nothing but the toughest core. It is very tough, and it will help bacteria to survive in the extreme condition. That's why spores are very tedious to destroy. Spores cannot be destroyed by ordinary temperature. To destroy spores, you need a special solution. Those which form as spores and those which will not form as spores. So sporulating bacilli कौन सा है? Spores are formed. In that also you have aerobic. Aerobic मतलब इनको ऑक्सीजन लगता है. Anaerobic इनको ऑक्सीजन नहीं लगता. Aerobic spore forming bacilli. Bacillus anthracoid. Bacillus subtilis. This is sporulating aerobic bacilli. Sporulating aerobic gram positive bacilli. Bacillus subtilis क्या है? So Bacillus subtilis is a spore forming gram positive bacilli. Spore forming gram positive bacilli. Spore forming aerobic gram positive bacilli. Clostridium tetani. Clostridium tetani. Clostridium tetani जो tetanus का infection होता है. So Clostridium tetani is nothing but the anaerobic spore forming gram positive bacilli. मतलब ऐसा चलना anaerobic spore forming gram positive. Clostridium botulinum ये एक टॉक्सिन बनता है. It produces the endotoxin. Clostridium botulinum का जो bacilli है, so Clostridium botulinum will produce a toxin known as a endotoxin, which produces a potent endotoxin, which is the muscle relaxant. Botulinum toxin जो है ये क्या है? मसल रिलैक्सेंट होता है बोटुलियम टॉक्सिन. जो भी जिनको भी है ना, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स है, या फिर कोई सेरेब्रल पाल्सी की पेशेंट है, या फिर सेरेब्रल एटैक्सिया का पेशेंट है, वो पेशेंट में मसल का स्पास्टिसिटी होता है. मसल बिकम रिजिड and there is no flexibility. So to make muscle flexible, so botulinum toxins are injected. ये बहुत महंगा होता है इसका इंजेक्शन. ये 1 milligram of botulinum toxin, 1 ml of botulinum injection cost 50,000. 50,000 का एक ml का इंजेक्शन. Clostridium and perfringens. So all they are known as anaerobic sporulating gram-positive bacilli. Bacillus anthracis, Bacillus subtilis, aerobic sporulating gram-positive, non-sporulating. तो देखो non-sporulating, so mycobacterium tuberculosis, which are stemmed by xylellin method, and lactobacillus corynebacterium, listeria, actinomyces, they are not stemmed by xylellin method. They are a non-spore forming or non-sporulating gram-positive bacilli. Then next is the gram-negative bacilli. So Pseudomonas enterobacteria, Brucellosis, and Acromobacteria. They are the gram-negative bacilli. So when is to terminate. Next, what is nothing more? Bacilli. Bacteria again divided into two types depending on their motility. अगर कोई bacilli bacteria मोटाइल है तो उसको बोलते हैं मोटाइल. मूवमेंट करता है तो मोटाइल, नहीं करता है तो नॉन मोटाइल. Bacilli again divided into two, gram positive बैक्टीरिया, मोटाइल, either मोटाइल और नॉन मोटाइल. मोटाइल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. सो नॉन मोटाइल एंड मोटाइल. मोटाइल कौन सा है? Anthracoid, Anthracoid, Clostridium. They are nothing but the Bacillus, Anthracoid and Clostridium. They are the motile gram-positive. Corynebacterium, Mycobacterium, Lactobacillus, Listeria, Actinomyces, Clostridium perfringens, tetani. They are the non-motile gram-positive. Now gram-negative, Vibrio, Cholera, Salmonella,
Escherichia coli, Proteus, Providentia, Pseudomonas, Citrobacter, Algaligian pecaris, Alphinia. So these are nothing but the motile gram negative bacilli. Non-motile cone, Shigella, Klebsiella, Brucella, Pastronella, Haemophilus. So these are the gram negative non-motile bacilli. एग्जाम्पल के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है इसलिए इंक्लूड किया लास्ट ईयर भी पार्ट में था सो नाउ डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सो आई विल टेक दिस एंड देन आफ्टर दैट विल स्टॉप डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके ऊपर कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है सो डिफरेंट कंपोनेंट एंड ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव तो सेल वॉल पहला है सेल वॉल थिकनेस इसका सेल वॉल ज्यादा थिक होता है इसका थिक So cell wall thickness in case of gram positive is around 25 to 25 nanometer thick. Okay? In case of gram negative, gram negative में क्या होता है 10 to 15 nanometer. So you can see cell wall is a thicker. Cell wall is a thicker in case of gram positive. It is a thinner in case of gram negative. Now in case of gram positive, peptidoglycan layer. So it is nothing but the peptido 90% होता है. पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होता है किसमें ग्राम पॉजिटिव में सो मोर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव इट इज ओनली 5 to 10% द ग्राम नेगेटिव टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव इसके ऊपर जीपैट 2021 में क्वेश्चन है टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द व्हिच ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव तो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होता है ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है तो टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव ऑप्शन विद द ग्राम नेगेटिव पॉलीसेकेराइड कंटेंट ज्यादा ग्राम पॉजिटिव में होता है ग्राम नेगेटिव में यहाँ पे पॉलीसेकेराइड नहीं होता है तो मतलब क्या होता है यहाँ पे लिपिड ज्यादा होते हैं लिपिड कंटेंट लेस और एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव मोर लिपिड कंटेंट नेचर ऑफ सेल वॉल इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव इट इज सिंपल सेल वॉल बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव इट्स कॉम्प्लेक्स इफेक्ट ऑफ लाइसोजाइम ऑन द सेल है ना जो बाकी के लाइसोजाइम होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स में लाइसोजाइम होता है सो न्यूट्रोफिल्स कैन इजीली destroy the gram positive cell but not destroy the gram negative cell. Streptomycin tetracycline sensitivity मतलब streptomycin tetracycline easily किसको kill करेंगे streptomycin tetracycline they will easily kill the gram negative bacteria but gram positive bacteria less susceptible for the tetracyclines and penicillin sulfonamides they will kill the gram positive because penicillin जो होता है they will act on a peptidoglycan layer. The penicillin will destroy the gram-positive bacteria. They will not destroy the gram-negative bacteria. Examples. इसके ऊपर GPAT 2 में क्वेश्चन है. Examples of gram-positive bacteria: Bacillus anthracis, Clostridium tetani, gram-positive. Staphylococcus aureus, gram-positive. Corynebacterium diphtheria, gram-positive. तो याद रखना है gram-positive के organism के example. Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium tetani, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheria. ये ग्राम नेगेटिव के याद रखना है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ई कोलाई साल्मोनेला टाइपी विब्रियो कॉलेरा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीपैट 2020 आई थिंक 23 में मैच द फॉलोइंग बैक्टीरिया विद देयर रिस्पेक्टिव मतलब बैक्टीरिया का नाम दिए थे एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में दिए थे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये भी क्वेश्चन आ चुका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट am I audible to you audible आएगा am I audible to you or not so again you can see over here the gram positive gram negative difference because it is very important gram positive gram negative so देखो gram positive bacteria so cytoplasmic membrane दोनों में सेम होता है peptidoglycan layer 15 to 25 नैनोमीटर होता है इसमें gram positive में peptidoglycan layer इसमें कम होता है gram negative in the gram positive bacteria you have picoic acid gram positive bacteria में क्या है picoic acid है gram negative bacteria में है क्या flagella दोनों में क्या होता है सेम होता है flagella size दोनों में सेम होता है nucleus का size भी दोनों में क्या है ये लगभग सेम होता है तो डिफरेंस वही है कि पेप्टिडोग्लाइकान है ना लेयर कॉम्प्लेक्स वगैरह तो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है सो दिस इज द पार्ट मोस्ट ऑफ योर